ठीक है, आया समझ में ये चीज कि एसेट क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, so assets are basically the property of the business or anything which helps in increasing income in near future. Now the second thing is, how many types of assets are there? So two, tangible or intangible. Current and non-current. Current and non-current. Yes, so current and non-current. है ना? So there are two types of assets. One is current asset and the other one is non-current. Current assets are those assets which are put to use within 1 year. Within 1 year. Yes, yes, sir. यूज हो जाता है, that is current. And जो 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होता है, that is non-current. Non-current. Non-current asset. Okay. Now further moving on, non-current assets कितने टाइप के होते हैं? सर वो दो. कौन कौन से? Sir, tangible or non-tangible? Tangible, intangible. Tangible, intangible. Tangible assets किसको बोलेंगे? Sir, that can be seen and touched. Which and convert. as a physical existence, अगर बहुत easy language में हम लोग समझने की कोशिश करें तो that assets which have the physical existence is tangible, that can be seen or touched, है ना? और intangible वैसे assets हैं जिनका physical existence नहीं होता. Clear? Yes, sir. Example, can you name two of the intangible assets? Sir, goodwill. Goodwill. Patent. Copyright. Trademarks. Trademark. Computer software. So, all these are basically licensed. Not we does not use the word computer software. We use the word license over there. Because we have the right in the license. If we are using computer software also, we have purchased its license. That is why it is an asset for us. So all these are intangible assets. ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? Intangible assets हो जाएगा. और tangible assets जिसका physical existence है, land, building, machine, ये सब चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, एक टाइप का और एसेट है जो कि हम लोग इसके टाइप्स में नहीं पढ़ते हैं, जनरली अलग से पढ़ते हैं, fictitious assets. Have you ever heard about it? Yes, sir. क्या होता है fictitious assets? सर जो कंपनी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है, जैसे कि हमारा प्रीपेड एक्सपेंस ये सब होता है. नहीं, हाँ मतलब ठीक है, मतलब fictitious assets are those assets जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, जिसको हम लोग बेच नहीं सकते. जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट मेरा फ्यूचर में इनकम जनरेट होगा, है ना? वी विल बी अर्निंग income in future because of advertisement, so it is an asset by the virtue of the definition. But can we sell that advertisement expenses? No, so it is a fictitious asset. Else than the fictitious asset, acha, can we sell the goodwill? No, sir. No, sir. Goodwill can be sold in cash. गुडविल यस सर, गुडविल सोल्ड होता है. कैसे? सो अभी हम लोग फ्रेंचाइज देखते हैं, काफी सारे फ्रेंचाइज खुले हुए हैं, दुकान सब, जैसे डोमिनोज, मैकडी और ये सब. सो दे आर यूजिंग द नेम ऑफ दैट फ्रेंचाइज और नॉट? डोमिनोज का, मैकडी का, दे आर यूजिंग दैट फ्रेंचाइज और नॉट? सो दे हैव पेड देम मनी टू यूज देयर नेम. सो इफ आई एम यूजिंग देयर नेम एंड पेइंग देम मनी, सो इट इज देयर गुडविल. Because without goodwill, no one will going to pay you the money. Okay. So remember this: कि intangible assets can be sold. It has the monetary value, but fictitious assets cannot be sold, and it does not have its monetary value. Okay, clear? Yes, now sir. we further move on to liability. What do you mean by liability? What do you mean by liability? Or borrow the money from the others, outsiders.
Okay. responsibility of the business. हाँ देखो बहुत सिंपल, अगर हम लोग एक लाइन में समझना चाहे तो इट इज अ बर्डन टू पे ऑन द बिजनेस, है ना. बिजनेस में whenever there is a burden to, देखो we are studying accounts, we are going to prepare tally, ठीक है. तो हम लोग जब अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो we should think कि we are the business, हम लोग को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा. So we will be assuming ourselves as a business कि we are the business. Now we will see कि उसके लिए assets क्या है, liabilities क्या है, from the business point of view, not from the owner point of view. Okay. So liability is the burden on the business to pay. Now, how many types of liabilities are there? Sir, long See, term or The short current term? and In today's class we will current be and just non-current. discussing this basic terms because we already know about these terms and you can write all the terms because it is going to be used in near future. So yes, tell what types of liabilities. Current and non-current liability. Okay, see, there are two bases basically to see the types of liabilities. Okay, one is the period and the other is the nature. So according on the basis of the period, there are two types of liabilities: current liability and non-current liability. Current liabilities are those liabilities which are paid within a year, and non-current liabilities are those liabilities which are paid after 1 year. Example, bank loan, है ना, clear है? Yes, sir. Yes, sir. So on the basis of nature, there are again two types of liabilities. तो अगर तुम लोग को लिखना है तो इस चीज को लिख लो कि लाइबिलिटीज के दो बेसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक तो पीरियड हो गया, करंट एंड नॉन करंट, एंड द अनदर बेसिस इज इट्स नेचर. नेचर के अकॉर्डिंग दो होगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल लाइबिलिटी? Just like equity. Just like equity, simply internal liabilities are those liabilities which is between the owner and its business. Just owner and business. Even employees are not internal when it comes to liability. Okay, so any liability between owner and its business is internal liability, and any liability between business and the outsiders will be external liabilities. ठीक है, तो even employees will be in the category of external liabilities. Now can you give some examples of liabilities? Yes, sir. Creditors, loans, or Borrowing. overdraft, Bank bank overdraft. overdraft. Okay. And prepaid expense, is prepaid expense a liability for us? Yes, sir. Yes. कोई और? Sir, it's a asset for us. Prepaid expense is an asset for us. It is not a liability. It is an asset. Okay. Outstanding will be the liability. Outstanding expenses will be the Yes, liability. sir. Sorry, sir. Outstanding is a liability. Prepaid expenses will be asset. Income received in advance, Liability. Liability. it Liability, is sir. a liability. ठीक है ना? Now we will be discussing about capital. What is capital? Sir, amount invested in the business or company It's by a the owner owner. fund. It's a owner fund. Simple It's means. a owner fund, है ना? So any amount invested by the owner in the business is capital. Now what does this amount mean? Means it is always in cash or it can be in kind, Sir, Sir, it cash can or be in in any. kind also. है ना? So remember this, because many of the time now we get confused about among all these. Many of us think it is always in cash. No, it can be in kind also.
If owner is bringing any furniture in the business instead of cash, that furniture will also amount to the capital. Okay. Then there are two types of capital: working capital and fixed capital. Accounting equation. Do you know about accounting equation? Yes, sir. Yes, sir. What is the equation basically? Asset is equal to liability minus capital, and liability Sure. plus capital. Sorry, liability plus capital, ठीक है. and capital is equal to asset minus liability. ठीक है, हो गया. मतलब asset is equals to liability plus capital. Now we can find anything from this, है ना? So if we are discussing about capital, so we can tell that capital is equals to asset minus liability. Okay. So in asset क्या हम लोग सब assets को include करेंगे या किसी को छोड़ भी देंगे? Assets सारे में assets को current include assets करेंगे. और fictitious assets को छोड़ के. ठीक है? In assets we will include each and every asset excluding fictitious. Fictitious assets does not have any market value. Market value ही नहीं होता उसका. Yes, तो हम लोग sir. sell ही नहीं करते. इसलिए हम लोग उसको include नहीं करते हैं. And when it comes to liability, we include all the liabilities, that is internal, external. See? इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? क्या बताए थे? अभी बताए थे इंटरनल लाइबिलिटी. Liability between owners and business. Business. And if any liabilities between the owner and the business, what we will be calling it? Capital. सर सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करते हैं. हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल को, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी इज कैपिटल इटसेल्फ ना. हम लोग तो कैपिटल ही निकालने का फॉर्मूला देख रहे हैं. यस सर. ठीक है. So we will be subtracting only external liability, deducting only external liability. So it will be asset minus external liability basically. ठीक है ना? So there are two types of liabilities now. Sorry, capital, working capital, and fixed capital. Fixed capital. Working capital are those capital which are used in the day-to-day business activity like Current cash. asset. है ना? Current asset. हाँ, जितने भी current assets. And fixed capital. Capital जब भी हमारा मशीन होता है, लैंड. Basically fixed assets will be the fixed capital, है ना? जितना भी purchase करते हैं हम लोग fixed assets को, जो पैसा लगता है, that will be the fixed capital. ठीक है? Now we will be discussing about vouchers. Do you know what voucher means? पढ़े हो voucher के बारे में? Yes, sir. Sir, Because it is really important. Sir, बोलो. evidence for the business it is transaction. evidence. It is an evidence for the business transaction. All the expenses that we make, okay, we have to maintain the voucher for it. So basically, in voucher, there is the date on which date we are spending this, the money. Then there comes the person name to whom we are paying that. Okay. Then what will be the purpose? The purpose will be written over there, and the signature of both, one who makes the voucher and one who is receiving the money, and the amount of money received. So this becomes an evidence of business transactions, that yes, business transaction has been recorded. Now whenever the auditor will come to check, they can check through this voucher. So voucher is important. So is it clear? Voucher is clear to all? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now discussing about discount. What do you mean by discount? Two types of discount. Discount is cash discount and trade discount. Okay. And trade So- discount is given on the wholesale
large quantity in a credit basis, Hmm. and cash discount is given in a cash basis or to transaction in cash basis also. ठीक है. So देखो, first of all कि discount हुआ क्या, तो it is a deduction from the list price, है ना. जो MRP होता है, MRP से अगर मेरे को कम पे मिल रहा है सामान, so it is a discount. So any amount deducted from the list price will be the discount. And there are two types of discount: trade discount and cash discount. Trade discount is generally given by the manufacturer to wholesaler, or from wholesaler to, retailer or customer. ठीक है ना. नहीं, कस्टमर को जनरली ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता अगर हम लोग, बिकॉज बल्क ऑर्डर पे ट्रेड डिस्काउंट होता है. Yes, sir. एंड ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को कैन बस बी कैश गिवन. डिस्काउंट होता है. हाँ, तो ट्रेड डिस्काउंट कैन बी गिवन इन बोथ कैश और क्रेडिट. ठीक है. इट इज नॉट Yes, नेसेसरी sir. कि कैश ट्रांजैक्शन होगा तो ही ट्रेड डिस्काउंट देंगे. इवन इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वी कैन गिव ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है ना. सो इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. Okay. So now we will be discussing about stock. What do you mean by stock? It is a inventory Uh, which was instant in cash. that are kept outside the stock for further use in the business. simply, अच्छा, first of all, goods क्या होता है? सर जो भी हमारे बिजनेस में बिजनेस को रन सर करने के लिए ट्रेड जो भी करने के लिए जो भी आइटम्स हम लोग यूज करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग बेसिकली गुड्स किसको बोलते हैं? जो मेरे बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शन में हम लोग जिसको सेल एंड परचेज करते हैं, दैट इज द गुड फॉर अस, है ना. एंड द स्टॉक इज द गुड्स remain unsold in the business. All the goods which are unsold in the business is going to be stock. जो सेल हो चुका है, that is not a stock. Clear? Now, how many types of stock can be there? So two types of closing stocks and opening stocks. closing and What is opening. opening stock? What's the repeat the question? Opening stock. What is opening stock? It's a starting of the financial year which was remain. Basically, the goods remain unsold in the starting of the financial year. That means 1st of April. Right? And what will be the closing? It was the end of the financial year remaining. And unsold goods remaining at the end of the financial year, that is 31st of March. And there is one livestock. Just like horse. Animals, basically Animal. the animals. Okay, na? They are the livestock like horses, cows. Okay, they are the livestock used in the business. So, ये सब clear है? Now we're discussing about outstanding expenses. What do you mean by outstanding expenses? Just like salary outstanding, which was It is an example. due. Basically, it is those expenses which are payable. ठीक है? Which are not yet paid, but is payable. जो अभी तक हम लोग पे नहीं किए हैं, पे करना है, टाइम हो चुका है पे करने का. That is, suppose करो कि we are paying rent on the first every month. On the first of every month, we are paying the rent. So if we does not pay the rent on the first and it is now second or third or fourth, that means that rent is outstanding. Okay, so that is the outstanding expenses. And outstanding expenses is an asset or a liability? Sir, liability. Liability. Sir, It is a liability. Clear hai? And the prepaid expenses will be the assets. Assets. The expenses paid Okay. in advance will be the prepaid expenses, and it will be asset.
Okay. And then accrued income. It's a asset. तो ऐसा इनकम जो मिला नहीं है बट अज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि हाँ मिल चुका है, मतलब मिलेगा। है हमारे वाला रिसीवेबल है। मिलने वाला। हाँ Yes. ठीक है, तो हाँ ठीक है। नाउ व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? It's a liability. Income received in advance is a liability. Those Liability. income which we have received in advance, है ना? So these points are clear. Now what do you mean by debtor? Sell the goods to the in a credit, then it's called debtor. Okay. And what is creditor? Buy the goods from the credit, then it's called creditor. चलो ठीक है. Now first of all we are assuming an example right now. Suppose we are talking about a manufacturer, a business and a customer. ठीक है, तो हम लोग अपने आप को एक बिजनेस मान लिए कि हम लोग बिजनेस है. Now if we purchase on credit from manufacturer, then manufacturer will be a debtor or a creditor? Creditor, sir. Sir, debtor. So it's a debtor. I repeat the question. Suppose we are a business, okay? हम लोग अपने आप को business माने. So we are going to purchase on credit from the manufacturer. So Sir, manufacturer is going to be a debtor or a creditor? creditor. Sir, debtor. Creditor, Creditor, sir. Creditor. 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 He will Can't be a say creditor. by purchasing the तो उससे परचेज कर रहे हैं, वो क्रेडिटर हुआ। हाँ. If credit purchase कर रहे होते हैं तो it is a creditor. They are creditor for us. So manufacturer will be the creditor. We have to pay them money. It is a liability. ठीक है. So debtor will be जिनसे हमको पैसा लेना है. They will be the debtor and they are the assets for our business. So ये creditor and debtor clear हो गया? Yes sir. Okay. Now further discussing about what is bad debt. debtor is not paid the money or denied the money, then it's called bad debt. So the amount which is recover, जिसको सर हम लोग recover नहीं कर सकते हैं. Which is irrecoverable, na? Yes. The amount of money which is irrecoverable is going to be a bad debt for us. And what will be the doubtful debt? Payment or not to payment by the debtors. Whether they can Sir, make or debt- they may not. बोलो. सर वैसा डेट जो हम लोग को मतलब बाद में पेड हो चुका है, रिकवर हो चुका है. नहीं, doubtful debts are those. वो तो debtors- provision है ना. हाँ, वो नहीं, provision. We are not talking about provision. We are talking about doubtful debts. है ना? Doubtful debts वैसे debts होंगे जो कि हो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं. Receivable, ठीक है ना? Confirm नहीं है कि वो मिलेंगे. Now further discussing about depreciation. What is depreciation? It's a Falling the fixed value of asset. reducing the value of the asset by the wear of obligations Wear and tear and of- wear and tear. और भी कोई बताओ. Sir, reduce in the value of assets because of its uses with the time. See, ये जरूरी है depreciation में बोलना. दो तीन चीज हम लोग को mention definition में करना बहुत जरूरी है. पहला चीज कि there is a permanent reduction. ठीक है, the reduction should be of permanent nature. It should not be temporary. So permanent reduction in the book value of the assets. Book value पे permanent reduction होना चाहिए. और वो भी किस assets के? Fixed assets के, fixed tangible assets के. ठीक है? So whenever there is a reduction in the book value of the fixed tangible assets, it will be depreciation. So
दो तीन चीज इसमें हम लोग अभी जितने लोग तुम लोग बोले हो डेफिनेशन, कोई भी परमानेंट रिडक्शन यूज नहीं किया हो. एवरीवन वाज लाइक कि रेड्यूस होना, डिक्रीज होना, बट परमानेंट डिक्रीज होना ये जरूरी है. ठीक है, जैसे वी टेक ऑन एक्सेप्शन, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन फॉर डेप्रिसिएशन. क्या यस कोई सर. एक्सेप्शन है डेप्रिसिएशन में क्या? सर लैंड. हाँ, लैंड इज द एक्सेप्शन बिकॉज लैंड का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है, अप्रिशिएट करता है. इट डज नॉट डेप्रिशिएट, वो डिक्रीज नहीं करता. ठीक है. एंड गोल्ड, गोल्ड प्रीशियस आइटम सर. गोल्ड इज अ प्रीशियस आइटम. सो गोल्ड का वैल्यू डिक्रीज करता है, यस सर, गोल्ड का वैल्यू परमानेंट डिक्रीज नहीं होता. वो करता है बट वो परमानेंट डिक्रीज नहीं होता है. अगर वो आज डिक्रीज है तो हो सकता है कल परसों में फिर उसका वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो हाई जाए. हो जाए. यस सर. सर तो ठीक है. इसमें हम लोग तो इक्विटी भी ले तो वो सकते हैं ना? परमानेंट रिडक्शन इसीलिए बोले. क्या चीज? इक्विटी सर, उसमें भी तो परमानेंट डिडक्शन Equity, नहीं how होता can है. shares, we can say shares, we will not Yes, be sir. saying equity, we can say shares, है ना? So यस कैपिटल. ठीक है, समझ में आया डेप्रिसिएशन? यस सर. ठीक है. अब फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं इंसॉल्वेंसी क्या होता है. सर जो एंटरप्राइजेस जो है वो डेट को फुलफिल नहीं कर पाते तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कोई भी कंपनी या एंटरप्राइजेस. ठीक है. जो भी इंटरप्राइजेस अपने डेट्स को, बेसिकली व्हेन अ बिजनेस इज अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटी आउट ऑफ इट्स एसेट्स, है ना? यस सर. जब कोई भी बिजनेस अपने लायबिलिटीज को नहीं पे कर पाता है अपने एसेट से, तो दैट बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट. ठीक है ना? और इंसॉल्वेंसी जो है उससे बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है. यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक में कोई किसी को डाउट है कोई भी टर्म में तो पूछो. नो अभी तक सर. हम लोग जितना चीज डिस्कस की उसमें तुम लोग को अगर लगा हो कि कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया या समझना चाहिए या डाउट है तो पूछ लो, फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको. नहीं है? नो सर. चलो बहुत बढ़िया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू अ जर्नल. व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? यप. यस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ of a financial ट्रांजैक्शन. transaction. Recording of a financial transaction or event. Just don't use the word transaction or event. Events are also there. ठीक है ना? So transaction or event, they form whenever we record it in book of accounts, it is a journal. And the process of recording transaction is called journalizing. Journalizing. ठीक है ना? The process of recording transaction or event is called journalizing. एनालाइजिंग. ठीक है. अब ये जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लोग किस ऑर्डर में प्रिपेयर करते हैं? सिस्टमैटिक ऑर्डर. सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर. सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. है ना? वी यूज द वर्ड क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करते हैं. क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज. डेट वाइज. ठीक है. मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर सपोज करो कि आज 11 तारीख है, हम 11 तारीख में एंट्री लिख दी है, फिर सोचेंगे कि 10 पे लिख दें, तो ये पॉसिबल नहीं है. अब या तो 11 ही पे लिखाएगा या फिर 12 पे लिखाएगा, मतलब आगे के डेट्स में लिखाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पीछे के डेट को, ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड करें. क्लियर है? यस सर. ठीक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जर्नल्स जो है, जर्नल एंट्री का रूल्स किसको किसको याद है? गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल. हाँ, गोल्डन रूल पहले बताओ. Golden rule, personal, receiver is debtor and giver is creditor. And real में what comes in debit and what goes out credit. Nominal is your expenses and losses are debit.
and profit and gains are credit. तो यहाँ तक ये रूल सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. पर्सनल अकाउंट में क्या जाता है? सर जो भी हमारा पर्सन से रिलेटेड इंडिविजुअल हो या फिर आर्टिफिशियल company में पर्सन एंड रियल पर्सन, कोई भी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, है ना, जो भी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जिसका अपना खुद का नाम है, ऑल गोज इनटू द पर्सनल अकाउंट। रियल में कैश बेसिस, क्या? रियल में ऑल द एसेट्स सर एक्सेप्ट दोज टेंजिबल और जो इंटेंजिबल पर्सनल में बोथ। जाते हैं। हाँ, बट एक्सेप्ट दोज व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन पर्सनल अकाउंट, यस सर। है ना, जो हम लोग पर्सनल अकाउंट में मेंशन कर सकते हैं उसके अलावा। एंड नॉमिनल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल द income and gains. प्रॉफिट लॉस, सर Seven ऑल income इनकम्स एंड गेन। प्रॉफिट लॉस। नहीं। हाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं जो शायद तुम लोग जानते होगे या नहीं। देखो, एवरीवन डू द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? यस सर, यस Okay. सर। So whenever we deposit money into the bank, मैसेज क्या आता है? कॉन्ट्रा एंट्री होता है। सर तो बैंक के केस में सर अपोजिट होता है, क्रेडिट, वो हमारे हमारे अकाउंट में क्रेडिट, क्रेडिट होता सर है। क्रेडिट अकाउंट बताता है। है ना, क्या लिख के आता है मैसेज? Yes, sir. योर अकाउंट हैज बीन Amount. क्रेडिट, अकाउंट इज यस क्रेडिटेड। है ना। बैंक के केस में एंड सर व्हेनेवर अपोजिट जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिट। डेबिटेड। यस सर। रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज देखो, अकाउंटेंसी या डेबिट क्रेडिट आया तो कुछ ना तो कुछ रूल्स क्योंकि रेगुलेशन। वो बैंक अपने को मानता है पर्सन, तो बैंक के ठीक पास है। पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा रियल की तरफ से, और अगर बैंक के पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होता है। बैंक के पास अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट Yes, होता है। सर वो तो सर बैंक वहाँ खुद सॉरी को सर, नहीं तो अगर तुम अभी बोले कि बैंक के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट होता है, तो हम लोग विथड्रॉ कर रहे हैं तब ना मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। सर तो वहाँ से बैंक, सर इसका कहने का मतलब है कि बैंक के पास अगर पैसा जाता है तो डेबिट हो जाता है और आता है तो क्रेडिट हो जाता है। वो कह तो रहा जब हम लोग है डिपॉजिट करते हैं, हाँ वो सही सर है। तो हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक हमारे लिए क्रेडिट कर देता है, लेकिन वो बैंक के लिए डेबिट हो जाता है। हाँ देखो, अब हम लोग समझते हैं। अभी क्या बोले थे कि व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स वी विल थिंक अबाउट दैट वी आर अ बिजनेस। मतलब अगर बैंक मैसेज भेज रहा है तो वी विल थिंक कि वी आर अ बैंक। ठीक है। अब ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है ना, ये सामने थर्ड पर्सन से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पर्सन इज बिजनेस, सेकंड इज us, and the third person is the customer. Okay, so a customer is receiving money, so they are the receiver, and the rule says debit the receiver. That is why Yes, जब भी sir. हम लोग पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर द रिसीवर। मतलब अगर बैंक, हम लोग अपने आप को बैंक मानेंगे, सामने वाला पैसा निकाला तो दे आर द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। और जब वो डिपॉजिट कर रहा है ना तो वो लोग पैसा दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। दैट इज व्हाई मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। है ना, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो बढ़िया है, क्योंकि ये सब चीज डेली लाइफ में यूज होता है। वी सी द मैसेजेस डेली, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये मैसेजेस क्यों, मतलब डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये सब चीज का नॉलेज होना जरूरी है। मॉडर्न रूल, अमेरिकन रूल, हाँ, अमेरिकन रूल, मॉडर्न रूल उसका बता सकते हो? हाँ सर एसेट और ये एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज किया तो क्रेडिट। ठीक है। और सर लायबिलिटी फिर इक्विटी और ये सब अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट और डिक्रीज किया तो डेबिट। ठीक है, देखो ये सब रूल्स का ना काफी यूज आने वाला है। हम लोग को जर्नल एंट्रीज का काफी यूज आने वाला है। और लेजर, लेजर आता है सबको प्रिपेयर करना? यस सर, रिपीट द क्वेश्चन। यस सर आता है। लेजर, लेजर आता है ना सबको, लेजर प्रिपेयर हाँ करना? सर आता है, ये आता है। हाँ था, ठीक है। So in the next class we will be discussing more about journal, ledger, little bit about trial balance. So first of all we will just cover theoretical portion in 2-3 classes, and then we will be starting the practical of tally,
because while using tally we should know all the basics. So कोई भी तरीके का confusion कहीं पे नहीं होना चाहिए. इसी के लिए we are discussing once the whole portion of class 11th basically, है ना? Yes sir. Yes, sir. तो अभी तक हम लोग जितना टॉपिक डिस्कस किया, आज के दिन जितना टॉपिक डिस्कस किया, उसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, No sir. sir, no. पूछना है? पक्का से नहीं है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अभिषेक। अभिषेक. Yes, sir. Abhishek, send me the attendance. Okay, sir. Just a second.